Hello and welcome to MS Classes. In this video, we will be discussing and analyzing JKAS Prelims 2025 paper. हम ये भी देखेंगे what was the difficulty level and what will be the cutoff. सबसे पहले हम देखते हैं what was the question distribution by subjects through the years. अगर हम बात करें हिस्ट्री की 2022 में 16, 2023 में 22 और 2024 में 14 क्वेश्चन, which means almost the same. थोड़े से कम हुए हैं लेकिन फिर भी the weightage is on higher side. Geography and environment की बात करें drastically decrease हुए हैं from 30 in 2022-2023 to 17 in 2024. Polity के almost same. Science के decrease हुए हैं drastically. Economy के भी decrease हुए हैं and very surprising thing is current affairs के increase हुए हैं from 2 in 2022 to 4 in 2023 to more than 20 in 2024. So let's see what was the difficulty level. अगर हम difficulty level की बात करें तो moderate to tough इसलिए है because of increasing number of the questions asked from current affairs. वो current affairs जो के difficult थे. So moderate to difficult questions were asked from current affairs. दूसरी चीज ये थी कि जो बेसिक जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से भी जो क्वेश्चंस थे इजी जो क्वेश्चंस थे वो बहुत कम थे, whereas moderate to tough questions were on higher side. So GS का पेपर जो था that was moderate to tough. CSAT की बात करें तो CSAT was also on tougher side because of tough math and reasoning. For example, 3 questions from sitting arrangement were asked, which were also difficult. So only those students जिन्होंने पैसेजेस को अच्छे से किया वो ही सिर्फ CSAT को क्लियर कर पाएंगे. I used to say in my class कि in CSAT you have to be jack of all subjects, all trade, jack of all trade and master of one. So in passages जो students passages में master कर गए हैं they are able to clear this CSAT easily. But CSAT was on tougher side because of tough math and reasoning. Then cutoff की बात करते हैं तो cutoff के different parameters अगर बात करें तो 3 parameters पेपर कैसा था, difficult था या नहीं था, what was the number of aspirants who were appearing in this exam and what was the number of posts. पेपर की बात करें तो पेपर was difficult that just we talked about. Number of aspirants अगर हम बात करें पर जो सेंटर है पर रूम तो उसमें अराउंड 90 to 95% स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, whereas number of posts जो हैं they are 95, last year 75. So keeping this consideration we can say that open merit ST1, ST2 then SC. ओपन मेरिट का अगर इस कंसिडरेशन को लेते हैं तो ओपन मेरिट का पहले कट था 58. ओके, देन एससी का कट था सो लेट्स सी 2023 2024 ओपन मेरिट का कट था 58, एससी का कट था 53, ST1 का कट था 50 पर था. But keeping in the view the difficulty level of the exam, the cut off and also the number of posts have increased. तो उसकी वजह से जब पोस्ट इंक्रीज हुई है तो कट ऑफ डाउन जाना चाहिए. बट बिकॉज ST2 कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है तो जो नंबर इंक्रीज हो जो कट ऑफ डाउन होना था दैट इज नॉर्मलाइज्ड, वो कैंसिल आउट हो गया है. तो मेरे हिसाब से द कट ऑफ शुड बी अगेन बिटवीन 55 और 55 to 65 के बीच में. So it is not going to go high because of the difficulty level was high. Then ST1 की बात करें it will be around 45 to 50 के बीच में. New category ST2 again 50 to 55 के बीच में. SC again 50 to 55 के बीच में. So this is the cutoff prediction according to me. Now what is next? So what should we do? So all the students who are getting more than 45 or 50, 45 in case of categories and 50 in case of open merit should start their preparation, mains preparation as soon as possible.